Now we start with the measurement of surface tension. For measurement of surface tension, we will be discussing particularly three methods. One will be capillarized method, another will be using stalgmometer method. In case of stalgmometer, we further divided it into two parts. One is drop weight method and one is drop number methods, and then tensiometer method. So we start with capillary rise method. We have discussed that when we dip a capillary into a liquid, then liquid rises to certain height in a capillary tube, and that is the basis for the measurement of surface tension here in the capillary rise method. So according to the principle of this method, when one end of a capillary tube is put into a liquid, then the force of surface tension pushes the liquid into the capillary to a certain height till the force of surface tension acting upward balances the weight of the liquid column acting downward. So let us consider a capillary of radius r centimeter is put into a liquid of density d gram per centimeter cube having surface tension gamma dynes per centimeter, and if h be the height of liquid rises in the capillary tube and theta be the contact angle, we will see in the diagram on the next page, then the component of surface tension acting in the vertical direction will be gamma cos theta, and income circumference of the capillary by the formula that will be equal to 2 pi r. So what is there that in this diagram, this is the liquid whose surface tension is to be measured. This is the capillary tube which is being dipped into the liquid, and then the liquid rises to certain height in this capillary tube. Say this height which is raised by the liquid is h, and this is the curve which is made by the liquid along the side of the glass tube of the capillary, and therefore the force of surface tension which is acting along this surface of the liquid is along this arrowhead, and that is say gamma. And if this theta is the contact angle with the surface of the liquid, then this gamma can be resolved into two components. One will be gamma cos theta and another will be gamma sin theta. So the force of surface tension acting upward all along the circumference will be 2 pi r gamma cos theta. Gamma cos theta is the component which is acting upward, and 2 pi r is the circumference. So the total force of surface tension which will be acting on the surface will be 2 pi r gamma cos theta. Now the weight of the liquid column acting downward, that will be pi r square h dg. Pi r square h, this is the volume of the liquid column, this is the height of the liquid, r is the radius of this capillary, and by formula the volume of this liquid will be pi r square h. D is the density of the liquid and g will be the acceleration due to gravity. So volume pi r square h, volume of the liquid column, multiplied by d density, that will give you the mass, and when mass is multiplied by g acceleration due to gravity, that will give you the weight of the liquid column acting downward. Now when the equilibrium stage is reached, that is the weight of the liquid column acting downward and the force of surface tension acting upward, they are balanced by each other, then the equilibrium stage will be reached, and then that stage the two forces will becomes equal. So at equilibrium 2 pi r gamma cos theta,
This is the force of surface tension acting upward, and this is the weight of the liquid column acting downward. They will balance each other. So 2 pi r gamma cos theta will be equal to pi r square h dg, or gamma will be equal to r h dg upon 2 cos theta. So exact relation is this. So if we want to calculate the surface tension of a liquid using capillary rise method, then what we have to do, we have to measure the radius of the capillary, r, d is the density of the liquid, g is acceleration due to gravity, h is the height of the liquid column which has raised in the capillary tube, and theta is contact angle. However, some approximation is taken that usually this, though we have shown this angle theta is quite large, but usually this angle theta is very small and can be taken nearly, approximately taken equal to 0, then cos theta will be equal to cos 0 and cos 0 will be equal to 1. Then this formula will be modified to some extent that gamma will be equal to r h dg upon t. Though this is a very simple relation, very simple experimental method, but the only difficulty is that this r, measurement of this radius of the capillary, slight error in the value of this r will change the result of this surface tension. And if we take the radius of the capillary tube large, then the rise in the liquid column will be very small and that may be negligible. So practically this method have a problem in the measurement of radius of the capillary. So another method which is very useful, that is stalgometer method. And as I have said earlier that this using stalgometer method, we can measure the surface tension either by drop weight method or by drop number method. We will be discussing each method separately. First is drop weight method. This method is based upon the principle that the weight of a drop falling slowly out of a capillary held vertically is directly proportional to its. So in drop weight method, this method is based upon the principle that the weight of a drop falling slowly out of a capillary held vertically is directly proportional to its surface tension. सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा होगी तो एक ड्रॉप का वेट ज़्यादा होगा, सरफेस टेंशन कम होगी तो एक वेट का ड्रॉप कम होगा. Thus for two liquids having surface tension, say one is having surface tension gamma 1 and another is having gamma 2, and m1 and m2 are their weights of each drop respectively, which are allowed to flow through the same capillary at the same rate. Then we will have, say, gamma 1 will be directly proportional to m1, gamma 2 will be directly proportional to m2, or gamma 1 by gamma 2 will be equal to m1 by m2. Thus, knowing the surface tension of one of the liquids, that of the other can be calculated by measuring the weight of one drop of each of the liquid. So for that measurement, we use stalgometer, which is a very simple apparatus. It is shown over here. This stalgometer will be there. एक रबर ट्यूबिंग हम इस पे इंसर्ट कर देंगे और एक ऊपर पिंच कॉक टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द लिक्विड हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं. और ये यहाँ पे एक कैपिलरी बनी हुई होगी इस स्टैल्गोमीटर में. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी क्लीन एंड ड्राई दिस स्टैल्गोमीटर and then fill it with, say, water, which is usually taken as the reference liquid, whose physical properties are well known. So it is filled with water, and then with the help of that pinch cork, it is adjusted to such an extent that the flow of water or liquid is such that 15 to 20 drops per minute are falling down. This flow should neither be very fast nor should be very slow. So it is usually adjusted between 10 to 20 or 15 to 20 drops per minute.
And once that setting is done, then throughout the experiment that pinch cock should not be disturbed. So experimentally what we will do, the stalkometer is first cleaned with chromic acid and then washed with water several times and finally dried in on. It is clamped vertically in a stand and a rubber with a pinch cock is attached to it, its upper portion as shown in the diagram. Then distilled water is sucked into the stalkometer and then adjusted the pinch cock so that the drop fall is about 15 to 20 drops per minute. Now allow 20 drops of water to fall into an already weighed, clean and dry empty weighing bottle. We take a empty weighing bottle, we clean it, dry it thoroughly and weigh already. And then it is taken and this stalkometer, which is adjusted in a stand, the flow of water is allowed and say 20 drops of water are collected into the already weighed bottle. Then empty the stalkometer, rinse with acetone and dry it. Then fill the stalkometer with the experimental liquid and again 20 drops of the experimental liquid are taken in the weighing bottle and weigh it again. This is the experimental part. Then for the calculations, simple calculation, suppose the weight of the, जैसे मैंने कहा था कि empty bottle weight करके हम रखेंगे जिसको ऑलरेडी हमने रिंस कर रखा है, ड्राई कर रखा है, say weight of the empty bottle is W1 gram. Then that bottle is filled with 20 drops of water. So weight of bottle plus 20 drops of water, say it is W2 gram. The same bottle is now filled with 20 drops of experimental liquid and say now the weight is W3 gram. Therefore, weight of 20 drops of water, the difference of the two weighing, W2 minus W1 gram. And the weight of 20 drops of experimental liquid will be difference of the two weighing, W3 minus W1 gram. Now, if gamma W and gamma L represents the surface tension of water and surface tension of experimental liquid, then by the definition, the surface tension of water will be directly proportional to the weight of the one drop of water and surface tension of experimental liquid will be directly proportional to the one drop of weight of experimental liquid. So gamma L by gamma W will be equal to W3 minus W1 upon W2 minus W1. ये अपने आप एक ड्रॉप का वेट आ जाए क्योंकि यहाँ ये भी 20 ड्रॉप्स का था, हमने यहाँ भी 20 रख लिया, यहाँ भी 20 रख लिया, 20 से 20 कट जाएगा, तो that will be automatically will represent the weight of one drop of experimental liquid and one drop of water. Or gamma L, that is the density of the liquid, will be equal to W3 minus W1 upon W2 minus W1 into gamma W. So experimentally what we have to do? We will take the stalkometer, clean it, dry it and then fill it with water. We adjust the flow of water or liquid to an extent that number of drops formed per minute are 15 to 20 and then it is clamped in a stand and a already weighed bottle is taken and 20 drops of water is collected and then weigh it again. Then the procedure is repeated with the experimental liquid. So 3 weighing, W1 and weight of empty bottle, W2 weight of bottle plus 20 drops of water and W3 weight of 20 drops of experimental liquid and bottle. The 3 weighing will be there, and if we know the surface tension of water by the table, then surface tension of experimental liquid can be calculated using this formula. Then another method using this stalkometer is drop number method. Sometimes instead of weighing one drop of water or experimental liquid, it becomes difficult for us if we have not electrical balance. Therefore, instead of drop weight method, we use drop number method. In this method, what we will do, that we will
take the same volume of experimental liquid as well as same volume of the reference liquid, usually water, and then the number of drops formed from the same volume of water and same volume of experimental liquid will be used for the calculation of surface tension of the experimental liquid. So it is, however, more convenient to count the number of drops formed by a given volume of a liquid than to find out the weight of drops. Therefore, the above method may be carried out in an alternate manner as follows. Suppose the number of drops formed from V ml of a liquid, जैसे मैंने कहा ये एक डेफिनेट वॉल्यूम V ml हम ले लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टेर्मोमीटर रहता है उसमें हम दो मार्क लगा देते हैं, वन अबाउ दिस बल्ब एंड अनदर बिलो दिस बल्ब। इस तरह से ये जो हम निशान लगा देंगे, ये जो मार्क लगा देंगे, पेन से इस पे मार्क लग जाएगा, तो इसके बीच जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो जाएगी। तो एक बार हम क्या करेंगे, वाटर से इसको फिलअप कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जब वाटर का लेवल यहाँ आता है और उसके बाद जो पहला ड्रॉप आता है, वी स्टार्ट काउंटिंग द ड्रॉप, वी कीप ऑन काउंटिंग द ड्रॉप 1 2 3 likewise, and the last drop will be when the level is here to the lower mark. We repeat the experiment 3 times and take the mean, and similar process is repeated with the experimental liquid also. So by putting these marks, the purpose is to keep the volume constant. So here we have said that if we take a particular volume V, suppose the number of drops found from V ml of a liquid is N, then in general the weight of one drop of liquid will be equal to, आपका V ml से बनते हैं N ड्रॉप, 1 ml से कितना ड्रॉप बनेगा, N by V, या वाइस वर्सा हम कहेंगे एक ड्रॉप N ड्रॉप बनते हैं V ml से, एक ड्रॉप कितने से बनेगा, V by N से, और उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू द वेट ऑफ वन ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. Thus, if from the same volume, say V ml of the two liquids, the number of drops formed are N1 and N2, and D1 and D2 are their respective densities. मान लो हमने लिक्विड फर्स्ट लिया है, उसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स उतनी ही वॉल्यूम से N1 बनते हैं, और जब दूसरा लिक्विड लेते हैं तो उसका उतनी ही वॉल्यूम हम लिक्विड के लेते हैं, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स N2 बनते हैं, जबकि पहले लिक्विड की डेंसिटी D1 हो और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी D2 हो. देन वी हैव द फार्मूला दैट गामा 1 by गामा 2 विल बी इक्वल टू मास ऑफ वेट ऑफ वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड फर्स्ट एंड वेट ऑफ वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड सेकंड, और वेट की जगह हम ये लिख सकते हैं V इंटू D1 by N1, V इंटू D2 by N2. सो V क्योंकि सेम रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट N2 इंटू D1 अपॉन N1 इंटू D2. Hence, knowing the number of drops, आपके पास राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 4 चीजें हैं, और ये एक और आ जाए 5 चीजें हो जाएंगी इंटू गामा 2. Experimentally, we have to measure 3 things: number of drops found from liquid first, number of drops found from liquid second, and density of liquid first is measured experimentally. And if the density of the reference liquid, say that is usually water, and the surface tension of the reference liquid, that is water, are known from the table, then the surface tension of the experimental liquid can be calculated using this formula. And the last method for the measurement of surface tension is the tensiometer or the torsion balance method. For torsion balance method, first we have a look at the diagram or experimental setup. What we will be doing, that this is a single pan balance type balance. Here this is the pan of this balance, and in this watch glass that liquid is taken whose surface tension is to be measured, and to this pan a platinum ring is attached, and that is dipped into the liquid.
Then this is a circular scale, and what we will do, we will stretch this part so that this pan comes out from the experimental liquid. Now, depending upon the surface tension of the liquid, if more is the surface tension of the liquid, more force will be required to pull out, and if the surface tension is less, then lesser force will be required. And if lesser force is applied, then the reading on the circular scale will be less, and if the more force is applied, then the reading on this circular scale will be more. So this method is based upon the principle that the force required to take out a horizontal platinum ring dipping just below the surface of a liquid is directly proportional to the surface tension of the liquid. जैसे हम अभी कह रहा था कि surface tension अगर ज़्यादा है liquid की तो आपको ज़्यादा force apply करना पड़ेगा, अगर surface tension कम है तो आपको कम force apply करना पड़ेगा. The force required is measured either by attaching the platinum ring to one end of the beam of a sensitive balance and placing weight on the other side, or by using this is a manual method, or by using a special balance called torsion balance, जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया. In this balance, the platinum ring is attached to one end of the beam and the other end of the beam is fixed to a stretched wire which can be given a torsion by suitable device. The amount of the torsion just sufficient to take out the ring can be recorded on a circular scale attached to one end of the wire as shown in figure. इसको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं बाल्टी और रस्सी की हेल्प से, तो पुली होती है चकली जिसको हम कहते हैं, और इनिशियली जब पानी की बाल्टी कुएं में डूबी हुई होगी और वो पानी से फुल भी है, तब भी हम जब ऐसे रस्सी को खींचते हैं चकली के ऊपर से, उस पुली के ऊपर से, तो पहले हमें एहसास होता है कि बहुत कम फोर्स हमें लगानी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो वाटर के सरफेस पे जब वो बाल्टी आती है तब हमें लगता है कि हाँ भाई बाल्टी भरी हुई है और हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. और उसके बाद बिल्कुल उस बाल्टी को जस्ट बाल्टी का जो आखिरी एंड है उसको वाटर के सरफेस से जस्ट निकलते टाइम पे हमें मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ती है. और वही बाल्टी अगर हमें पानी के बजाय कीचड़ में से निकालनी हो तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, इफ द सरफेस टेंशन इज मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, एंड वट एवर फोर्स विच इज रिक्वायर्ड दैट विल बी रजिस्टर्ड ऑन द टॉर्सन angle in the form of torsion angle on the circular scale, and say if θ1 is the torsion angle for the liquid first and θ2 is the torsion angle for liquid second, whose surface tension are gamma 1 and gamma 2, then we will have gamma 1 by gamma 2 will be equal to θ1 by θ2. Thus, knowing the surface tension of water, that of the experimental liquid can be calculated using this simple torsion balance method. Now, in case of property of liquid surface tension, some results of surface tension and chemical constitutions are also we have to discuss. From the study of large number of liquids, MacLeod found the relationship between surface tension and density. Though there is no direct relation between the value of surface tension and chemical constitution of a substance. However, in terms of another term known as paracore, we will be able to discuss the relation of surface tension with the chemical constitution. So the relationship between the surface tension and density is given as gamma raised to power 1 by 4 upon d minus d is equal to c, where gamma is surface tension, c is a constant. Capital D is density of the liquid in the liquid phase, and small d is the density of the same liquid in the vapor phase. Equation first gives good result over a wide range of temperature for normal liquids, that is non-associated liquids. Then further modification, Sugden in 1924 modified the equation by multiplying both sides by m, the molecular weight of the liquid. We get m into gamma raised to power 1 by 4 upon d minus d
is equal to m into c. C is again constant, m is molecular mass, that will also be a constant for a particular liquid, and this constant m into c is represented by another constant, and that is expressed p square bracket. Here this constant p square bracket is known as para-core. Putting m upon d, molecular mass upon density, is equal to volume, that is the molar volume of the liquid. Then equation third becomes, इसकी जगह m upon d की जगह आपके पास आ जाएगा v into gamma raised to power 1/4 is equal to p, para-core. And if surface tension of the liquid is 1, then para-core will be equal to v. तो कभी कभार सिर्फ para-core की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, what do you mean by para-core? इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी. Hence para-core of a liquid may be defined as the molar volume, means the volume of 1 mole of a liquid, but at specified condition, at a particular temperature at which the surface tension of the liquid is unity. So para-core of a liquid may be defined as the molar volume of a liquid at a temperature at which the surface tension of the liquid is unity. This molar volume will be equal to para-core only when the surface tension is 1. And the surface tension, how the surface tension changes, means as we go on changing the temperature. So at a particular temperature, when the surface tension is 1, at that temperature, whatever is the volume of 1 mole of liquid, that will be equal to para-core. The application of para-core in deciding, मैं जैसे कहा था कि डायरेक्ट आपके पास कोई रिलेशन नहीं है कि surface tension and chemical constitution of a substance can be correlated. Now we can use this para-core. The application of para-core in deciding chemical constitution of a liquid is based upon the fact that para-core is an additive as well as constitutive property. Additive means उस substance में क्या क्या है उस पर भी डिपेंड करेगी para-core की वैल्यू, एज वेल एज वो किस तरह से अरेंज्ड हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो उसके कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है और एडिटिव प्रॉपर्टी भी है. द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी द टोटल वैल्यू ऑफ व्हिच इज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. फॉर एग्जांपल, द मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज गिवन बाय द सम ऑफ द एटॉमिक masses of the constituent atoms. The para-core values associated with the atoms are called atomic para-cores. On the other hand, a constitutive property of a molecule is defined as that property which depends upon the constitution of the molecules. जैसे मैं अभी कह रहा था, constitution means arrangement, the arrangement of atoms within the molecules. Surface tension, viscosity, optical activity are examples of constitutive property. In case of para-core, it is found that the total para-core value of a molecule containing some multiple bonds or a closed ring etc. depends not only upon the atomic para-cores. क्या क्या एटम्स है उसी पे डिपेंड नहीं करेगा, उनका अरेंजमेंट किस तरह से उस पर भी डिपेंड करेगा, बट आल्सो अपॉन द मल्टीपल बॉन्ड्स और रिंग्स प्रेजेंट. द para-core वैल्यूज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड्स, क्लोज्ड रिंग एटसेट्रा, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल para-cores. तो दो तरह के para-core की बात हो जाएगी. एक एटॉमिक para-core विच इज एडिटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द constituents atoms present in the molecule, and another is structural para-core, that means that depends upon the arrangement of the constituents particles. कभी कभार ये जो हमने different methods discuss किए हैं for the measurement of surface tension, capillary rise method as well as drop number and drop weight method, and then the para-core value, इन पे based numerical problems हो सकती हैं. तो एक एक दो शॉर्ट एग्जांपल आपके पास दे रखे हैं. ये कैपिलरी राइज मेथड पे है, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर, तो ये तो हो जाएगा R. डिप्ड इन ए लिक्विड हुज डेंसिटी, आप ये देखते चले जाएं गिवन क्या क्या है, ये D हो जाएगा. द लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी टू ए सर्टेन हाइट, ये H हो जाएगा. कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, G आपको गिवन है, दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी आर गिवन, जैसे मैंने कहा, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम दे रखी है आपके पास R. ये जो आपके पास दे रखा था एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा.
सो हाफ ऑफ द डायमीटर, डेंसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। हमने जो मेथड डिस्कस किया था उसमें सरफेस टेंशन के लिए जो सिंप्लीफाइड फार्मूला आया था गामा इजिकल टू आर एच डी जी बाई 2, तो आपके पास आर है, एच है, डी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सारी चीजें दे रखी है। जस्ट इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला, this will be a very simple example. This is another numerical problem which is based on the drop weight method. Given that 20 drops each of water and ether weigh 3.6 gram, 64 gram and 0.852 gram. तो ये एक तरह से कह लो कि W1 और W2 हो गया आपके पास। Determine the surface tension of ether if the surface tension of water is given. इससे सिंपल न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। आपके पास 4 पैरामीटर है, गामा 1 बाई गामा 2 इजिकल टू W1 बाई W2, और आपके पास 3 पैरामीटर उसमें दे रखे हैं। आप यहाँ 20 से डिवाइड ना भी करें तब भी सीधा भी वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 अपने आप कट जाएगा। अदरवाइज एक ड्रॉप का वेट कैलकुलेट कर लिया, एक ड्रॉप ईथर का वेट कैलकुलेट कर लिया, सरफेस टेंशन वाटर की दे रखी है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ ईथर बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यूज। देन the density of acetone is at 20 degrees Celsius is this. Calculate the surface tension of acetone given that the para-core equivalent of carbon, hydrogen and oxygen and double bond are this and this respectively. तो ये लास्ट में जो मैं पैराकोर की बात कर रहा था, आमतौर पे इस पैराकोर पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में होती है। तो इसमें अब पैराकोर वैल्यू दे रखी, वी आर गिवन दैट डेंसिटी ऑफ एसीटोन आपको दिया हुआ है, पैराकोर वैल्यू तो इंडिविजुअल दे रखी है, पैराकोर वैल्यू ऑफ कार्बन, पैराकोर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, पैराकोर वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, पैराकोर वैल्यू ऑफ डबल बॉन्ड। सो यू विल ड्रा फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, CH3 CO CH3। अब जैसे हमने कहा था कि पैराकोर इज एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें कार्बन 1 2 3 कार्बन है, एक कार्बन की जो पैराकोर कंट्रीब्यूशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपके पास हाइड्रोजन 3 and 3 6, एक हाइड्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है वो ले लेंगे, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का अलग से कंट्रीब्यूशन है उसको एक डबल बॉन्ड। तो ये टोटल जो है पैराकोर कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके पास किसका, एसीटोन का। और एक बार टोटल पैराकोर वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाए, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डेंसिटी। मोलिकुलर मास ऑफ एसीटोन आप कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूला से, एज पैराकोर इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये जो हमने मॉडिफाइड फार्मूला दिया था m इंटू गामा रेज टू पावर 1/4 अपॉन d इजिकल टू पैराकोर। तो अब आपके पास पैराकोर की वैल्यू है, आपके पास डेंसिटी की वैल्यू है, आपके पास मोलिकुलर मास है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा दैट इज द सरफेस टेंशन। तो इसी तरह से ये एक और शॉर्ट एग्जाम्पल है आपके पास पैराकोर कैलकुलेशन पे। और उसके बाद आपके पास कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं जो सरफेस टेंशन की मेजरमेंट पे हैं। ये सब आपके पास आपके लिए कह लो कि होमवर्क रहेगा जो आप करेंगे, सोल्ड एग्जाम्पल एज वेल एज अनसोल्ड एग्जाम्पल्स, ये सारा आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की हम एक डेफिनेशन देते हैं सिंपल से, दो तरीके से हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर देते हैं कि द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पोजेस्ड बाय ए लिक्विड इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। या इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर देते हैं, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन लेयर ऑफ ए लिक्विड ऑफर्स टू अनदर लेयर ऑफ लिक्विड मूविंग विद ए डिफरेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि जैसे किसी आप घर में, समाज में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले लें, उसमें एक आदमी अपनी कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है, उसी के घर का, उसी के परिवार का सदस्य या उसी की पार्टी का सदस्य, उसी का कुलीग, दो तरीके से उसका बिहेवियर हो सकता है। एक तो वो उसको उसकी प्रोग्रेस में हेल्प करे और एक वो उसकी प्रोग्रेस को हर्डल करे। तो जो वो उसकी प्रोग्रेस को हर्डल कर रहा है वो एक तरह से कह लो कि वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है या उसके फ्लो को वो रोकने की कोशिश कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी।
तो दो तरीके से हमने डिफाइन कर दिया है विस्कोसिटी को. टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ विस्कोसिटी, let us consider the flow of a liquid is through a cylindrical pipe. Say these are the different layers of the liquid which is flowing through this cylindrical pipe. If we take that this layer, say this layer is there which is moving with a particular velocity, that is v centimeter per second, and another layer which is x centimeter apart from this layer is moving with different velocity, and say its velocity is v plus small v centimeter per second. That means the difference of velocity between these two layers is small v centimeter per second, and the distance of separation between the two layers is x centimeter. Then the force of friction which this layer offers to this layer, or this layer offers to this layer, will be viscosity. It has been found that the force of friction F between two cylindrical layers, each having, say, area of each layer is a square centimeter, separated by a distance, as I have said, that x centimeter, and having a velocity difference of v centimeter per second. Then force of friction will be directly proportional to the area of cross section of the layer, will be directly proportional to difference of the velocity, and inversely proportional to the distance of separation. देखो, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक स्कूटर आपको टक्कर मारता है और एक बड़ा ट्रक टक्कर मारता है, तो स्कूटर का सरफेस एरिया कम है तो हमें कम नुकसान पहुंचाएगा, कम फ्रिक्शन ऑफर करेगा, और ट्रक का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा. दूसरी चीज़ है कि एक वो स्कूटर ही है, लेकिन एक तो वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें टक्कर मारता है, और एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टक्कर मारता है. तो वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा. तो वेलोसिटी डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और एक हम कहते हैं कि एक स्कूटर, हम मान लो वहाँ से रोड से 100 मीटर दूर खड़े हैं, तब हमारे रोड से गुजर रहा है, तब हमें जो फ्रिक्शन या जो नुकसान हमें पहुँचा सकता है वो कम होगा. और एक केस है कि हम रोड के किनारे पे खड़े हैं, तब हमारे पास से स्कूटर निकलता है तो हमें नुकसान फ्रिक्शन ज़्यादा ऑफर करेगा. तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो यू कैन राइट दैट एफ विल बी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमने हटा दिया, ईटा इंटू ए वी अपॉन एक्स, वेयर ईटा इज कॉन्स्टेंट एंड नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नाउ if x is 1 centimeter, the difference of separation between the two layer is 1 centimeter, and a is 1 centimeter square. दोनों लेयर जो हैं उनका एरिया है that is 1 centimeter square, and the velocity difference is also 1 centimeter per second. Means a, v and x, all these are 1. Then automatically putting these values of a, v, x, f will be equal to eta. Hence, coefficient of viscosity may be defined as the force of friction required to maintain a velocity difference of 1 centimeter per second between two parallel layers 1 centimeter apart and each having an area 1 centimeter square. तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी, हम उसको कह रहे हैं कि ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो एक लेयर दूसरी लेयर को ऑफर करे. कितना फ्रिक्शन ऑफर करे कि उन दोनों के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और दोनों का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इतना फ्रिक्शन ऑफर करे कि उन दोनों का जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का हो जाए. उस टाइम पे जितना भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो ऑफर कर रहा होगा, दैट विल बी नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. Thus, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F इज इक्वल टू मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था अभी आपके पास, ईटा इंटू ए वी अपॉन एक्स, और ईटा विल बी इक्वल टू F इंटू एक्स अपॉन ए इंटू वी. फोर्स के लिए डाइन, डिस्टेंस के लिए
सेंटीमीटर, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड. आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 9 सेंटीमीटर per centimeter square second. This will be the dimensional unit of viscosity. और इसी को हम poise दे देते हैं. So generally the unit of viscosity is poise. The unit of viscosity are dyne second per centimeter square. This quantity is called poise. Poise, millipoise, centipoise, इस तरह से हम ये values use करते हैं. Now one more term that is reciprocal of viscosity is known as fluidity. तो जो viscosity है वो तो लिक्विड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, रोक रही है. जैसे मैं बात करूं कि वाटर और हनी में से विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो नेचुरली दैट विल बी द विस्कोसिटी ऑफ हनी विल बी हायर बिकॉज द फ्लो ऑफ हनी विल बी स्लो. And fluidity, if you talk in terms of fluidity, then fluidity of water will be more because that will flow with more ease. So fluidity is the ease with which a liquid can flow, or reciprocal of coefficient of viscosity is called fluidity. It's usually represented by phi, and hence phi will be equal to 1 upon eta. Naturally, the unit of fluidity will be inverse of viscosity, means Poise inverse. And then effect of temperature on viscosity, as I have already discussed, effect of temperature on surface tension. There also I have said that the effect of temperature on viscosity and surface tension is in a similar manner. So here also with increase of temperature, the kinetic energy of the molecules of the liquid increases. Hence the liquid starts flowing faster. Therefore the viscosity of a liquid decreased with increase in temperature. And as a rough estimate, it is observed that the decrease is about 2% per degree rise of temperature. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कह रहा है कि जनरली 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 2% विस्कोसिटी है दैट डिक्रीजेस. सो मैथमेटिकली आल्सो if you plot a graph between log of coefficient of viscosity and 1 upon t, then you will get a straight line with slope is equal to E upon R. And this is given by an equation. That equation is known as Arrhenius equation. Arrhenius equation gives the relation between viscosity and temperature as follows, that eta is equal to A into E raised to power E upon RT, where A and E are the constant for the liquid and T is the absolute temperature. E is called activation energy for viscous flow and A is Arrhenius constant. The above equation in the logarithmic form is written as log of eta will be equal to log A plus E upon 2.303 RT. Thus a plot of log eta against 1 upon T is a straight line with slope equal to this, जैसा हमने अभी ऊपर दिखाया है. और अगर हम log eta versus T प्लॉट करेंगे तो then that will be a straight line but with the negative slope. So this is all about general for the viscosity, and then next time we will be in the next lecture we will be discussing the methods for the measurement of viscosity.